Hello everyone. So today we will be studying spores and pollens. So in this lecture I'll be mainly teaching spores, and pollens I'll be teaching in the next lecture. So spores and pollens is something that are produced in the life cycle of the plants, and it is a part of their reproductive cycle. So first we'll deal with spores. So what is the difference between a spore and a pollen? Is like spores are produced by lowly plants, मतलब plants में भी there are higher plants and then there are lower plants. Okay. So जो ये lower plants है, they generally produce spores, and the higher plants they generally produce pollens and ferns. So these pollens and spores are very useful as microfossils because they are preserved as fossils, and during their life, during the study and during their life cycle, there are many types of plants in the geological history, and these different types of plants are used for different things. For example, a particular type of plant was there in the Miocene, and then there was particular type of plant in the Eocene. So studying these spores and pollens, we can identify what kind of vegetation, what kind of plant, what kind of climate existed, because few spores will not survive in few type of climate, few pollens will not survive in few types of climate. So we can also analyze the paleoclimatic changes that had happened. So these spores and pollens like foraminifera and Radularians serve as very important microfossils in the geological history. So it is very important to study spores and pollens. Now it is, as you know, that I haven't studied, I think, the reproductive cycle of foraminifera, because it is not a part, but spores and pollens ka reproductive cycle of the plant is very necessary because they are produced in that reproductive cycle. So spores and pollens ka we will study. I will have a brief introduction followed by their morphology and their reproductive cycle. So lowly plants का क्या मतलब होता है? So lowly plants में basically we have the number one, algal ancestors. Number two, the bryophyta. So bryophyta are non-vascular plants. Non-vascular plants का मतलब है there is a particular type of vascular tissues in the vascular plants called the xylem and the phloem, which takes the nutrients and water and food from the root and they transfer it to the different parts of the plant. So in plants में वो tissues नहीं होते हैं, so that is why they are called the non-vascular plants. And number three, in lowly plants we have the tracheophytes, which are primitive vascular plants. So these three plants है जो lowly plants category में आते हैं. उसमें से जो life cycle पढ़ेंगे almost same होता है, but we'll mainly study इसका bryophyta का. Okay, and इन दोनों का almost they are the same. Done. So the second thing what we'll study about spores is their morphology. So what does morphology mean? Morpho means their structure, outer structures. Okay, so outer structure किस पे depend करता है? You have studied more microfossils. So number one, shape. Number two, aperture. Number three, size. Number four, sutures, etc. तो इन कुछ चीजों पे the outer structure depends, and that is how we study the morphology. तो सबसे पहले आते हैं शेप पे. बाकी चीजों का जो है अपर्चर वगैरह जो है इसमें इतना काम नहीं आता है. So the shape जो है of a spore basically depends on the meiotic division. तो meiotic division का क्या मतलब है कि there are two types of cell divisions. Number one is mitosis. Number two is meiosis, which we'll study in detail in
when I study the life cycle of the bryophyta. So जो myotic cell division है basically उस पे depend करता है, not in the mitosis. तो म्योटिक डिवीजन स्पेस से शेप डिपेंड करता है, शेप म्योटिक डिवीजन में भी मायोसिस पे डिपेंड करता है. तो किस तरह का मायोसिस द स्पोर हैज अंडरगॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इसका शेप कैसा होगा. नाउ देयर इज अ स्पोर मदर सेल जिससे स्पोर्स फॉर्म होते हैं. तो सबसे पहले व्हेन आई स्टडी मॉर्फोलॉजी हम एक स्पोर मदर सेल को बनाएंगे. मदर सेल है. तो जो पोलेंस होते हैं उनके कुछ लेयर्स होते हैं. तो जब भी आप विल मेक अ पोलन विल ऑलवेज सी दैट देयर आर एटलीस्ट 2 लेयर्स. सो जो लेयर्स भी होते हैं देयर एंडोस्पोर्स, आउटरस्पोर्स, पेरिस्पोर्स. सो पेरिस्पोर्स जो है वो जनरली रहता नहीं है फॉसिल्स में. तो व्हेनेवर विल स्टडी विल नॉट मेक अ सिंगल राउंड, विल मेक 2 राउंड्स. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ मायोसिस दैट अ सेल कैन अंडरगो. और अब स्पोर मदर सेल. सो ये एक स्पोर मदर सेल है. दैट इज स्पोर मदर सेल्स कैन अंडरगो. वन इज 2 टाइप है. वन इज सक्सेसिव. ये सक्सेसिव एक सक्सेसिव है और एक साइमल्टेनियस है. ठीक है. सो फर्स्ट आई विल स्टडी दिस साइमल्टेनियस मायोसिस. फर्स्ट आई स्टडी द साइमल्टेनियस मायोसिस. तो साइमल्टेनियस मायोसिस में क्या होता है, जो स्पोर मदर सेल है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. इट डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स सच दैट ईच पार्ट इज अटैच्ड टू 3. तो एक जो है वो 3 पे कैसे अटैच रहेगा, ओनली एंड ओनली इफ दे आर दिस शेप. सो दिस इज अ shape which I had with me. So this is only with one spore mother cells when it divides like this in 3D, because it is very difficult to explain 3D, so I got this. So एक spore mother cells ऐसे divide होते हैं. तो एक cell is attached to 1, 2 and 3. Okay, so just like this one is attached to 1, 2 and 3, this one is attached to, so इस side के 3D में वो divide हो जाता है. So one divides into like this. Okay, so ये 3D में so ये 2D में कैसा दिखेगा. So each one is divided into, so एक Y structure form होता है, because each cell is divided into 3, is attached to 3. So whenever you see like this from 2D, so you'll get to see this a Y shaped. किसी भी डायरेक्शन से आप देखोगे तो आपको Y shape ही दिखेगा. And if you see from above, so you'll be able to see this. So if I draw a 2D structure, तो ऐसे होगा कुछ. Again we'll make 2 layers, right? तो ये जो है ये इसका 2D स्ट्रक्चर है. आप अगर इसको 3D में भी बनाना चाहे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली. कैसे भी बना दो, मतलब इट विल कुछ स्पेशल आपको 3D में इसको नहीं दिखेगा. इट विल लुक, सो इधर इट विल लुक लाइक दिस. अब फॉसिल में भी ये दिस वन विल लुक लाइक दिस ओनली. सो ये जो स्पोर्स हैं इसके डिस्पर्सल्स होते हैं. इट विल लुक इन फॉसिल, इट विल आल्सो लुक लाइक दिस. सो फॉसिल को हम थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. सो दिस वाई स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये वाई स्ट्रक्चर कैन बी बिट रेज्ड इन द फॉसिल व्हेन यू सी इट. ओके, so this Y structure when it is raised is called a rhizorate. And this particular portion if you see from above, ऐसे आप देखते हैं ऊपर से,
when you see it is in your, when you see from above this particular where the three, ये जो तीन बाकी आप जो surface देख रहे हैं, this is called the am or the equator. So इसको, ये जो है ये am और equator आप इसको कह सकते हैं. This is the y mark और the equator को आप और am, and this one is the, और इसको लिजोरे भी कहेंगे और वाई शेप्ड कॉन्टैक्ट सरफेस भी कह सकते हैं. ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द सैंडविच. इस टेट्राड को, दिस व्हेन स्पोर मदर सेल्स डिवाइड, इट इज कॉल्ड अ टेट्राड बिकॉज चार और फॉर्म हो रहे हैं. तो इस टेट्राड को कहते हैं टेट्रागोनल टेट्राड. Am I clear? So, and this is how it looks in fossil. Okay, so this is the Lizore, and this is the equator, and that's it, I think. And this is the Y mark, or you can also call it the triple mark, triplet mark. तो ऐसे जो इस टाइप के जो the spores which are formed from simultaneous meiosis are often called the triplet spores. Okay, because of their triple junction over here, or the Y junction, or when it is raised it is called the Lizore. So because of this thing they are called the triplet spores, because of this triple junction or the Y-shaped structure. और Y-shaped structure जब raise हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं what? The Lizore. And this particular portion, the contact surface over here, जितना area वो ले रहा है, it is called the equator or the am. Now one more thing, this, if you see a spore like this portion will be the proximal portion. This type जो आपसे दूर है will be the distal portion. Now एक जब spore which get dispersed and when they are stored at fossil, they get compressed from their proximal distal portion. तो आप उसको ऐसा raised नहीं देखोगे in this portion because वो ऐसे दब जाते हैं, वो they get pressed like this. The view you get is generally the proximal distal view. You don't get it from the equatorial point of view, right? So this is about the triplet spores. Now from successive meiosis, एक टाइप का अदर स्पोर्स फॉर्म होता है. तो सक्सेसिव मायोसिस में क्या होता है? द स्पोर मदर सेल्स फर्स्ट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स लाइक दिस. अगेन विल मेक पहले ऐसे डिवाइड होते हैं एंड देन इट अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग देन अगेन डिवाइड्स इनटू टू मोर. सो हमें कुछ ऐसा मिलेगा. ये जो है ये 2D डायग्राम है. अगेन 3D में हैव यू एवर सीन ऑन ऑरेंज? जो ऑरेंज के डिविजन्स होते हैं, दे आर समथिंग लाइक वन, एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीसरा, चौथा. तो इट इज लाइक दिस. दे आर सक्सेसिवली 3D में, दे आर सक्सेसिवली अरेंज लाइक दिस. सो लेकिन जब उस 3D का को आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस. ये वन पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन. तो बाकी जो दो है दे विल बी एट द बैक, वो पीछे की साइड है. सो दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस. सो ये कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा दिख रहा है? जस्ट वन स्कार मार्क इज देयर एंड दिस कॉन्टैक्ट सरफेस you call is the monolith mark. Okay, so we'll do it in the, so this is the 3D. अब fossil में ये कैसा दिखेगा? तो fossil में it will look like, because fossil में क्या होता है, it get pressed from the proximal distance part. जब वो disperse होके it get deposited, it get pressed from the top part. So top part में press होके it will look somewhat like this. So this is the monolith contact surface. This will be somewhat the equator.
is a monolith mark. So clear? So this is the fossil view. This is the 2D view, and this is the 3D view. This is the fossil view, and this. The fossil view is different from the 3D view because fossil में the proximal distance part get compressed, and what you get, the final result is something like this. So these are the monolith spores. Monolith spores. These spores are less common, and more commonly you get those, that is the trilith spores. And in this, ये जो tetrad form हो रहा है, this is called the tetragonal tetrad. No, sorry, tetrahedral. I think I just 1 minute. This is called the tetragonal tetrad. Just pardon me. This is called the tetragonal tetrad, and this one, pardon me for my mistake. This one is the tetrahedral tetrad. So am I clear? So two type of cell divisions के साथ दो type of spores बनते हैं. One is the trilith spore, one is the monolith spore. This spore is less common, this spore is more common. The trilith spore somewhat looks like this. एक जो spore mother cells है divides into 4, and each cell is in contact with the other 3, giving rise to a Y-shaped mark or the Y contact surface or the triplet mark. इसीलिए इसका नाम triplet spores है. And when the mark is a bit raised, it is called the lizore. And these tetrad is known as the tetrahedral tetrad. And in that successive division क्या होता है? Spore mother cells divides into 2, वो 2 फिर 4 बनता है, and in 2D it looks like this. और वो just take an example of an orange, और कुछ भी 4 चीजें को आप stack कर दोगे for 4 pieces of chalk, one after the other. So ऐसे somewhat like this, you see 1, 2 and 3, 4, 2 पीछे है, 2 आगे है. सो अगर आप 2D देखोगे तो ये ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा एक फ्लावर टाइप का दिखेगा, बट इन 3D these are the 2 cells और 2 पीछे है. And when in fossils they get compressed in the proximal and distal view. So ऐसा दिखता है. तो proximal distal view भी एक बार हम देख लेते हैं. So this ये जो हम ऊपर से देखते हैं, this is the proximal view, this is the distal view, and this जो portion है, this will be the equatorial surface or the amp. I hope I am clear in the morphology part now. So next we'll go to the different parts. So different parts में as I told you, the pollens will study in very much detail, but the spores जो है, just remember very vague that the spores का 3 basic 3 parts are there. One is the endospore, two is the exospore, and 3 is the perispore. So अगर हम एक मोनोलेट, so the monolith spores जो होते हैं वो generally bean shaped होते हैं. So let me make a monolith spore, a bean shaped spore, because हमने उसको कैसे बनाया था, ऐसे ना. तो ये generally जो होते हैं थोड़े bean shaped होते हैं. तो इसका 3 ऐसे will make 3 layers. So any idea where will be the endospore? As the name suggests, ये जो है हमारा एंडोस्पोर, ये जो होगा हमारा एक्सोस्पोर होगा, एंड पेरिस्पोर सबसे बाहर रहेगा. ओके, सो दिस so the perispore is basically something which does not survive the fossilization. ना ही endospore is basically made up of cellulose. So will it survive fossilization? No. The perispore also does not survive fossilization. Only the exospore survives fossilization.
So this exospore is made up of sporopollenin. And what is sporopollenin? I have given you the definition. No need to by heart it, but just keep in mind what is it. Is a type of protein, and that is what the cell is made up of. Okay, and अगर हम इसका एक नॉर्मल व्यू देखेंगे तो द पेरिस्पोर्स का बहुत सारा फैशन हो सकता है. इट कैन बी लाइक दिस एंड देयर आर मेनी अदर्स एंड देन देयर इज द एक्सोस्पोर्स. सो दिस इज द पेरिस्पोर, this is the exos and this is the endo. I hope I am clear in this view. Okay, so this is the perispore. अगर आप इसको काटते और काट के आप इसको देखें तो जो पेरिस्पोर्स है इसके different types of shapes होते हैं and based on different types of design it has different names. So ये जो detail है of the spores will not study in detail, but when we study the pollen we'll study the morphology in more detail. So I hope I am clear. Just remember three. Endo as the name says is the inner, exo is the outer, and peri उसका भी outer होता है. And this is a simple diagram for monolith spores जिसका हम वो the different layers of the cell I am showing. And next we'll move on now to the what? Now to the cycle, the bryophyte. So as I said, we'll move on to the bryophyte का ही हम करेंगे. Bryophyte reproductive cycle, and in that reproductive cycle you will get this term called meiosis. तब मैं बताऊंगी what is a meiosis, and वो meiosis से you have to connect this. इस meiosis पे depend होके shape आता है. Okay, and shape से दो type of spores आते हैं. One is monolith. Again I'm repeating so that you people depend. One is trilith.